Hi, in this video, we are gonna learn a new problem solving technique related to functional equations. Okay, so let me show you a question. Here it is. So problem है कि आपके पास ये functional equation 2fx plus thrice of f of minus x, it is equal to 15 minus 4x, and it is satisfied for all x which are real numbers. ठीक है, सारे real numbers के लिए hold करती है. Okay, then if this is the case, you need to find out f of minus 1. ठीक है, so usually what you need to do is, see, अगर इस तरीके की आपके पास एक फंक्शनल इक्वेशन है, देन कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आप निकाल सकते हो. सो थिंग्स लाइक एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप एफ ऑफ 0, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 2 ये सब कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन फाइंड इट एंड यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू. ओके, वेरी इजीली. ठीक है, so let's try to do it. So 2fx plus 3f of minus x equal है 15 minus 4x के. Okay, so what if I replace x with minus x? I can do that because ये फंक्शनल इक्वेशन वैलिड है सारे रियल नंबर्स के लिए. तो अगर x एक रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी एक रियल नंबर होगा. ठीक है, तो आई कैन रिप्लेस दैट. तो ये माइनस एक्स के लिए भी सेटिस्फाइड रहेगी. तो ऐसे में we will get twice of f of minus x plus thrice of minus x बन जाएगा x. It will be equal to 15 plus 4x. Okay, so now I have two equations and I have mainly two variables fx and f of minus x. Okay, तो मैं इन्हें simultaneously solve करूंगा तो मुझे fx मिल जाएगा. ठीक है, so what can be done here? तो एक इक्वेशन है ये मेरे पास. ठीक है, ये वापस मैंने सेम इक्वेशन लिखी है. नाउ इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, अगर मैंने ऐड कर दूं, विच कैन बी डन बिकॉज दोनों इक्वालिटी से सेटिस्फाई हो रही है, आई कैन सिंपली ऐड देम. तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, थ्राइस ऑफ एफ एक्स, टोटल हो जाएगा 5 टाइम्स एफ एक्स. ट्वाइस थ्राइस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, टोटल हो जाएगा 5 एफ ऑफ माइनस एक्स. 15 plus 15 is 30 and this gets cancelled out. Okay, this is my third equation, this is my second equation, and this is my, let's say, first equation. Okay, so now what I can do is I can use, let's say, first and the third equation to find out the value of fx. Okay, so in equation 1, if I substitute f of minus x, ठीक है, ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले थर्ड इक्वेशन को. तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा था तो दिस विल बी 6 इंटू 5 30. ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस एफ एक्स इंस्टेड ऑफ दिस, प्लस thrice of fx, it will be equal to 15 plus 4x. Okay, so 12 minus 2fx plus 3fx will be equal to 15 plus 4x. So fx will be equal to 15 minus 12 is 3 plus 4x. तो हमारे पास फंक्शन आ चुका है. एंड नाउ व्हाट वी नीड इज f of -1. तो अगर मैं x की जगह -1 रखूंगा आई विल गेट दिस. तो फाइनली f of -1 will be 3 plus 4 of -1, 4 times -1, which is -1. ठीक है, so that's how you can do these kind of problems. Okay, let me give you a practice problem. Okay, so this time functional equation is twice of fx plus f of 1 minus x equal to x. ये सारे x के लिए hold करता है and you need to find out f of 4. Okay, so solve this problem and you can provide your answer in the comments. Okay, let's see who gets it right.